Alright, in this video we are going to discuss its May-June 2020 paper 1-1. Pehla question, write 23 upon 5 as a mixed fraction. So it's very simple. We need to take the division here. So 23 and 5. 5 4s are 20. Remainder आपके पास बचा 3. So the answer is 4 whole 3 divided by 5. That is your answer. Work out 3 divided by 8. Divide चेंज होगा, मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकेट कर दिया जाएगा फंक्शन का. 1 upon 6, 3 1s are 3, 3 2s are 6. It will be 1 upon 16. Question number 2, from the letter above write down all the letters which have line symmetry. Alright, किस किस की हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? H की लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, हमारे पास A की लाइन ऑफ सिमेट्री होगी और हमारे पास E की भी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी. यहाँ पर all the letters which have rotational symmetry, किसकी रोटेशनल सिमेट्री हमारे पास होगी? H की हमारे पास होगी और हमारे पास N की सिमेट्री होगी रोटेशनल. क्वेश्चन नंबर 3, the number in this sequence increased by the same amount each time. Dash 1.4, 2.3, 3.2. Find all the missing numbers. So it's very simple. हमें ये find करना है कि इनका डिफरेंस क्या है. So 2.3 minus 1.4 that will be 0.9. इसका मतलब ये हुआ कि अब जो नंबर होगा उसका भी डिफरेंस यहाँ से 0.9 का होगा. तो 1.4 minus 0.9 it's 0.5 और सेम चीज़ यहाँ भी चलती रहेगी. ये डिफरेंस भी हमारे पास 0.9 का है. इसका मतलब है नेक्स्ट नंबर जो होगा दैट विल बी 0.9 डिफरेंस एज वेल. सो दैट विल बी 4.1. ये आपका आंसर. क्वेश्चन नंबर 4, राइट 11 अपॉन 25 एज अ परसेंटेज. सो दैट विल बी 11 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100. 25 1s are 25, 25 4s are 100. 4 into 11 it will be 44. Alright. Find 12% of 40. So 12% means 12 upon 100 of 40. So सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 0 और 0 कैंसिल हो गए. अब क्या बचा आपके पास? 2 6s are 12, 2 5s are 10 and 6 4s are 24 divided by 5. 24 upon 5 is equals to 4.8. ये आपका आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्राम shows an isosceles triangle ABC and an equilateral triangle BDE. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की वजह से क्या हुआ कि आपके सारे एंगल हो गए 60, 60 और 60 because we have equilateral triangle, right? Further it says AC and BC are equal. तो मेरे पास length of AC and length of BC are equal. इसका मतलब ये हुआ कि एंगल A और एंगल B मेरे पास इक्वल होगा. तो ये एंगल आ जाएगा आपके पास 28. ऑलराइट, अगर आप देखो तो आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, ऑलराइट, जिसमें ये एंगल आपके पास 60 है. इसका मतलब जो एंगल मेरे पास बच गया ये एंगल मेरे पास आ जाएगा 120. अब आपके पास एक ट्रायंगल बन गया. सो यू कैन से दैट x प्लस 120 प्लस 28 इज इक्वल्स टू 180. So the value of x is 32 और ये आपका आंसर. Question number 6, Safura is buying some apples, bananas and peaches. She can buy a pack of 6 apples, pack of 5 bananas and pack of 12 peaches. She needs to buy the same number of each fruit. Calculate the smallest number of pack of apples, bananas and peaches that she needs to buy. सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे किसका, 6 5 and 12 का. ऑलराइट, so the LCM will be 6 1s are 6, 5 अपनी जगह आ गया, 6 2s are 12, 5 1s are 5, 5 1s are 5, 2 अपनी जगह and then 2 1 1 and 1. 6 5s are 30, 2s are 60. So the LCM is 60. That means the total number of fruits are 60. Alright. अब उसमें एप्पल्स कितने होंगे? तो बहुत सिंपल है, 60 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 10 पैकेट्स. तो फर्स्ट आंसर इज 10 पैकेट्स ऑफ एप्पल्स. उसके बाद बनानास कितने होंगे? 60 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 12. दैट मीन्स 12 उसके पास बनानास हो जाएंगे. एंड लास्टली 60 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू 5 पैकेट्स ऑफ पीचेस हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 7, फैक्टराइज 6c क्यूब प्लस 9c कॉमन ले लेंगे. यहाँ पर 3c कॉमन आया, बचेगा क्या आपके पास? इट्स 2c स्क्वायर प्लस 3. ये इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट वन, 5ay माइनस 2bx माइनस 2by प्लस 5ax. ऑलराइट, पहले मैं इसको अरेंज करता हूँ. सो 5ay के साथ हम लिख लेंगे 5ax को, और जो 2bx है इसके साथ आ रहेगा 2by. ऑलराइट, अब कॉमन ले लेंगे. कॉमन इज व्हाट? 5a, बचेगा क्या आपके पास? y प्लस x. यहाँ पर कॉमन क्या आएगा? माइनस 2b, और बचेगा क्या आपके पास? x प्लस y. ऑलराइट, x प्लस y कॉमन आ जाएगा. द लेफ्ट ओवर पार्ट वी हैव इट्स 5a माइनस 2b. ये आंसर है. It's question number 8. PQUV is a square with the side 6 cm. PQUV is 6 cm. QRST is a rectangle with width 4. The area of the square is equal to the area of the rectangle.
वर्क आउट द पेरीमीटर ऑफ द शेप. ऑलराइट, पहली चीज़ मेरे पास स्क्वायर है, दैट मीन्स दैट ऑल लेंथ आर 6. ऑलराइट, मुझे रेक्टेंगल की विड्थ नहीं पता, राइट, मुझे ये इसकी हाइट नहीं पता. सो लेट सपोज आई कॉल दिस लेंथ y. तो पहले मुझे रेक्टेंगल की लेंथ निकालनी है. फर्स्ट द एरिया ऑफ स्क्वायर वी हैव इट्स 6 into 6, दैट मीन्स 36. दोनों का एरिया बराबर है, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल द वर्किंग फार्मूला वी हैव इट्स 4 into y. द वैल्यू इज 36 इक्वल्स टू 4 into y. सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ y एंड दैट इज इक्वल्स टू 9. आपके पास इसकी वैल्यू आ गई है 9. ऑलराइट, फॉर पेरीमीटर वी नो दैट इट्स सम ऑफ ऑल साइड्स, सो नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द पेरीमीटर. So that will be 9 plus 4 plus 4 plus 6, 6 and 6. यहाँ पर जो ट्रिकी लेंथ थी जो हमारी रह गई है वो ये लेंथ रह गई है, ये हमने अभी तक ऐड नहीं किया था, एंड दैट लेंथ विल बी 3. So that is the critical part. When you add all those values it will be sum up to 38. That is your answer. Next part, write the ratio of 75 grams to 3 kg. तो पहले आपको यूनिट कन्वर्ट करना पड़ेगा. 3000 ग्राम्स हो जाएगा, दोनों साइड पे यूनिट सेम हो गया. 75 डिवाइडेड बाय 5 किया आपने, दैट विल बी 15. 3000 डिवाइडेड बाय 5, 5 6 आर 30, 300. 5 3s आर 15, 5 1s आर 5, 5 2s आर 10. So the final answer is 1:40. Next part, in a tennis club the ratio number of junior members, number of senior members is 7:10. There are 18 more senior members than junior members. Calculate the total number of members. Alright, so firstly I will make the ratio form. We have junior members and we have senior members. The ratio is 7:10. Alright, आपको दिया हुआ क्या है, there are 18 more senior members. मतलब मान लीजिए कि अगर जूनियर मेरे पास x होगा तो सीनियर मेरे पास x plus 18 होगा. Alright, by doing the cross multiplication we can simplify to find out the value of x. So now we have 7 times x plus 18 is equals to 10 times of x. Alright, simplify किया आपने. 7 into x plus 18 times 7. So 18 into 7 it's 126 is equals to 10 times of x. 7x वहाँ जाएगा, माइनस हो जाएगा. So 120x is equals to 3x and x is equals to what? It's 42 sorry. Alright, so x is 42. x आपका फाइनल आंसर नहीं है, आपको टोटल बताने. तो अगर आपके जूनियर्स अगर आपके x है दैट मीन्स 42, तो आपके जो सीनियर्स होंगे वो क्या हो रहेंगे 42 प्लस 18 विच इज इक्वल्स टू 60. सो 60 एंड 42 लीड्स टू 102. ये आपका फाइनल आंसर है. इट्स क्वेश्चन नंबर 10 द टॉपिक फ्रॉम स्कैटर डायग्राम. ये जो पॉइंट्स हाईलाइटेड हैं ये प्लॉट हुए हुए हैं, आपको ये पहले पॉइंट्स को प्लॉट आउट करना है. तो पहले मैं इनको प्लॉट कर दूँ मेरे पास. ऑलराइट, तो ये मैंने सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया है. अब आपको क्या बताना है, ऑन द ग्रेड हमने कर दिया वाला, ठीक है. व्हाट टाइप ऑफ कोरिलेशन, तो मेरे पास जो कोरिलेशन है इट्स अ पॉजिटिव कोरिलेशन. ऑलराइट, तो हम सिर्फ यहाँ लिख देंगे सिंपल पॉजिटिव. उसके बाद ड्रॉ अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट. अब मुझे लाइन ऐसी प्लॉट करनी है, लाइन की अप्रोच ये होती है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स लाइन के ऊपर लाइन के नीचे हमारे पास सेम हो. ठीक है, नंबर ऑफ पॉइंट्स लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे हमारे पास सेम हो. सो दैट इज द लाइन ऑफ बेस्ट फिट. अगर आप लाइन के ऊपर पॉइंट देखो तो इट्स 1 2 3 4 5. लाइन के नीचे देखो तो 1 2 3 4 5. तो ये मेरी लाइन ऑफ बेस्ट फिट आ गई है. इट्स पार्ट सी. पार्ट डी, कैन द स्कैटर डायग्राम बी यूज टू प्रेडिक्ट द हाइट ऑफ दिस प्लांट 100 days आफ्टर प्लांटिंग. गिव अ रीजन फॉर योर आंसर. इसका आंसर होगा हमारे पास नो. अच्छा, नो क्यों? क्योंकि ये बात कर रहा है 100 days की, लेकिन अगर आप फोकस करो तो आपके पास जो डेटा मौजूद है वो सिर्फ 80 days का है. ठीक है, जो लास्ट वैल्यू मेरे पास है वो 80 days की है, तो मैं 100 days पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकता. सो द आंसर इज नो. एंड द रीज़न इज क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है आफ्टर 80 days का. By writing each number correct to one significant figure, so that is very important कि one significant figure हो. Estimate the value of. All right, so 21.86 will be 20, 9.64 will be 10, 2.47 will be 2. 10 divided by 2 it's 5 and 20 minus 5 that is equals to 15. ये आपका आंसर. Question number 12 from the topic statistics. We need to find out the mode. Mode is what? Mode is the highest repeated value, right? So मेरे पास सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है वो 2 की आ रही है. So the mode is 2. After that you need to find out mean here. The working formula for mean is summation of fx divided by summation of f. Alright, तो fx कैसे निकालेंगे? यहाँ पर अब देखें ये f है, ठीक है, और ये मेरे पास x है. तो 2 times 1 it will be 2 plus
सिमिलरली यही काम यहाँ करेंगे, 7 टाइम्स 2 इट विल बी 14, ऑलराइट, प्लस 6 times 3 it will be 18, plus 4 times 4 it will be 16, and the last one 1 into 5 it will be 5 divided by total numbers we have, it's 20. So simplify it will be very simple. 2 plus 14 16, 16 plus 16 32, 32 plus 18 it will be 50, and 50 plus 5 it's 55. So you have 55 divided by 20, or you can say that 5.5 divided by 2, which is equals to 2.75. So that is your answer. Question number 13. During 2018, the population of a village increased from 200 to 250. Calculate the percentage increase. To find out percentage increase, what you need a difference. तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? इन दोनों का डिफरेंस आएगा 50 divided by original value. Original value was 200, and then simply multiply by 100. Zeros and zeros cancel, to ones are 2, to 25s are 50, so that will be equals to 25. ये आपका आंसर आ गया. Next part, the length of a rectangle is increased by 10%. The width of the same rectangle is decreased by 10%. Find the area of the new rectangle as a percentage of the area of the original rectangle. All right. So मान लें कि आपका जो एरिया था that is increased by उसकी जो लेंथ थी वो इंक्रीज हो गई 10%. अच्छा, तो यूँ समझते हैं, मान लें कि आपके पास एक रेक्टेंगल था, ये आपका इनिशियल रेक्टेंगल है, ठीक है ना. तो इसकी लेंथ मेरे पास है x. अब जो न्यू रेक्टेंगल आया उसकी लेंथ बढ़ गई है 10%, तो नाउ दिस लेंथ विल बी 1.10 ऑफ x. ऑलराइट. सिमिलरली जो मेरे पास विड्थ थी दैट वाज, लेट्स सपोज ये हम ले लेते हैं y, लेकिन अब जो न्यू विड्थ होगी दैट विल बी डिक्रीज बाय 10%. डिक्रीज का मतलब क्या हुआ कि अब ये आ गई मेरे पास 0.9 ऑफ y. ऑलराइट. मुझे निकालना है आपको फाइंड द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल एज अ परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल. ठीक है जी. तो मेरे पास जो एरिया होगा न्यू रेक्टेंगल का दैट विल बी 1.10x मल्टीप्लाई विद 0.9y डिवाइडेड बाय ओल्ड एरिया क्या हो जाएगा, सिंपल x इंटू वाई, and for percentage it will be multiplied by 100. So x and x cancel, y से y cancel, 1.10 times 100 that will be 110 multiplied by 0.9, which is equals to 99, and that is your answer. Question number 14. In a survey, some students were asked about their favorite type of music. They could choose classical, folk, reggae or rock. The following RF were calculated from the result. Type of music, and you have relative frequency. So what is the missing value we have? The relative frequency, the sum value is 1. So when you add all the values, 0.15 plus 0.22 plus x plus 0.39, it will sum up to 1. So that is equals to 0.24. Alright, that is your answer of the missing value. अब क्या कह रहा है आपसे? 300 students took part in this survey. Calculate the number of students who choose reggae. ऑलराइट. अब टोटल आपके पास स्ट्रेंथ कितनी है? 300 स्टूडेंट्स की है. उसमें से आपने चूज़ करना है कि कितने लोगों ने इसको सिलेक्ट किया होगा. सो इट्स वेरी सिंपल. आपके पास की RF आ चुकी है दैट इज 0.24. सो 300 टाइम्स 0.24. इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? इट्स वेरी सिंपल. 300 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय 100 कन्वर्ट किया डेसिमल को फ्रैक्शन में, 0 0 कैंसिल, 24 टाइम्स 3 इट्स 72, और ये आपका आंसर है. It's question number 15. Universal is a set from 1 to 10. F is a set factor of 24 and S is a set square numbers, right? तो मेरे पास F के एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? अगर 24 के फैक्टर्स की बात की जाए तो 1 इज़ अ फैक्टर, 2 इज़ अ फैक्टर, 3 इज़ अ फैक्टर, 4, 6, 8, आगे 24 आएगा, लेकिन वो चूँकि 10 से बड़ा हो जाएगा, सो वी आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड दैट वन. स्क्वायर नंबर हमारे पास कितने हैं? स्क्वायर नंबर हमारे पास 1 है, 4 है और 9 है. ऑलराइट. तो ऐसे नंबर जो दोनों में कॉमन आए वो नंबर हमारे पास 1 और 4 है, तो 1 और 4 मेरे पास सेंटर में आ जाएगा. ठीक है. अब बाकी नंबर्स हम लिख देंगे, जैसे कि हमारे पास एफ में क्या क्या आ रहा है. एफ में हमारे पास 2 आया है, 3 आया है, 4 तो हो गया, 6 आया, 8 आया, और हमारे पास एस में आ रहा है ओनली 9, क्योंकि 1 और 4 आ चुका है. जो बाकी एलिमेंट्स बच गए, मतलब 1 2 3 4 5 नहीं आया, तो बाहर आ जाएगा 6 7 8 9 एंड 10. तो ये आपकी कंप्लीट हो गई. इन पार्ट 2 इट सेज फाइंड एन ऑफ एफ यूनियन एस कॉम्प्लीमेंट. मतलब एफ यूनियन एस में कौन कौन से एलिमेंट नहीं है? 3 एलिमेंट नहीं है, 5 7 और 10. तो इसका आंसर मेरे पास आएगा ओनली 3.
For next part in the Venn diagram, shade the region P intersection Q intersection R complement. इसका मतलब है R तो शेड नज़र नहीं आना चाहिए, ठीक है ना. P intersection Q ये आएगा मेरे पास और R complement नहीं होगा, तो that will be your answer. Question number 16 very simple. It's 5 minus 12 equals to 2x. 5 minus 12 it's minus 7 divided by 2 equals to x. Part B, find the integer that satisfies. So minus 5 lesser than equals to 3x and we have 3x lesser than equals to 6. तो ये आएगा x should be greater than equals to minus 5 upon 3 और आपके पास आएगा x should be lesser than 2. You need to find out all the integers. तो minus 5 upon 3 से बड़े हों और 2 से छोटे हों. तो 2 से छोटे मेरे पास कौन कौन से हो सकते हैं. 2 इंक्लूड होगा, 1 इंक्लूड होगा, 0 इंक्लूड होगा. माइनस 5 अपॉन 3 का मतलब होता है माइनस 1 और 2 के बीच में, मतलब माइनस 1 तो इंक्लूड है मेरे पास, क्योंकि इसका आंसर माइनस 1.23 के अराउंड होगा. मैं रफली बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, क्योंकि अगर 6 होता तो 2 हो चुका होता. तो माइनस 1 से बड़ा होगा, माइनस 1, 0, 1, 2 ये 4 इंटीजर्स हैं. दैट इज योर आंसर. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 17. वी नीड टू फाइंड एफ ऑफ माइनस 3. जो कुछ आपके पास x की जगह लिखा है उसकी जगह आप माइनस 3 लिख दोगे, ठीक है. सो f ऑफ माइनस 3 इक्वल्स टू 5 माइनस 4 और x की जगह आएगा माइनस 3. सो इट लीड्स टू 5 प्लस 4 3 आर 12 लीड्स टू 17. ये आपका आंसर. नेक्स्ट वन, f इनवर्स ऑफ x. कुछ स्टेप्स होते हैं. पहला स्टेप कि आप f ऑफ x की जगह y रिप्लेस कर दो, ठीक है. तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल्स टू 5 माइनस 4x. अब आपने बनाना है x को सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई. मैंने इसकी पोजीशन यहाँ कर दी, इसको मैंने वहाँ शिफ्ट कर दिया और x का आंसर आ जाएगा 5 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 4. लास्ट स्टेप, जहाँ पर x है वहाँ पर f इनवर्स ऑफ x आ जाएगा और जहाँ पर मेरे पास y है वहाँ पर मेरे पास x आ जाएगा. दैट इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 18. द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ड्रॉन ऑन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड. तो इसका शेप का नाम क्या है. द शेप वी हैव इट्स अ ट्रेपीजियम. ऑलराइट, क्योंकि मुझे एक पैरेलल साइड भी नजर आ रही है, पी एस एंड क्यू पी, आर एस एंड क्यू पी. आफ्टर दैट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर. तो वर्किंग फॉर्मूला क्या है हमारे पास. इट्स x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. हमें चाहिए q और r. तो r के कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे पास. r इज माइनस 5 कॉमा 2 एंड q इज माइनस 2 कॉमा माइनस 3. तो प्लेस कर देते हैं हम इसको. मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास x1 y1 है, ये मेरे पास x2 y2 है. सो x1 प्लस x2 दैट मीन्स माइनस 5 माइनस 2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 माइनस 2 माइनस 3 अपॉन 2, माइनस 5 माइनस 2 दैट विल बी माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2, 2 माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 2 और ये आपका मिड पॉइंट आ गया. पार्ट सी, द लेंथ PS इज इक्वल्स टू m सेंटीमीटर. फाइंड द वैल्यू ऑफ m. ऑलराइट, तो PS की लेंथ, P के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या है. इट्स 4,3. Q के S के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या है. इट्स माइनस 2,5. वर्किंग फार्मूला क्या होता है हमारे पास. इट्स x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 विद द होल स्क्वायर एंड ऑन अंडर रूट. राइट, मैं वैल्यू प्लेस कर देता हूँ. मैं कहता हूँ कि P मेरे पास जो है इट्स x1 y1 और इसको मैं कह देता हूँ कि ये आ गया x2 y2. फॉर्मूले वैल्यू प्लेस करी. x2 इज व्हाट. x2 इज माइनस 2, x1 इज 4 होल स्क्वायर प्लस y2 इज 5, y1 इज 3 होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ माइनस 2 माइनस 4 इट्स माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 2 का होल स्क्वायर. माइनस 6 का स्क्वायर इट्स 36 प्लस 2 स्क्वायर इज 4 अंडर रूट 36 प्लस 4 इक्वल्स टू अंडर रूट 40. मेरे पास m का आंसर आ जाएगा 40. नंबर 19 वी नीड टू फाइंड P माइनस 3Q. तो P का मेरे पास मैट्रिक्स क्या है. P मेरे पास है 4 माइनस 1 माइनस 2 एंड 3 माइनस. अब मैं अपने मैट्रिक्स Q को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा. माइनस 3 माइनस मैंने बाहर रखा है, सिर्फ मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया. 3 0 आर 0, 3 माइनस 1 इज माइनस 3, 3 5 आर 15 एंड 3 4 आर 12. और अब मैं सिंपली इनको सॉल्व कर लूँगा कि 4 माइनस 0 इट्स 4, माइनस 2 प्लस 3 इट्स 1, minus 1 minus 15 it's minus 16 and 3 minus 12 it's minus 9. That is your answer. Determinant of R is 11. Find T. Determinant का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास. Determinant is equals to AD minus BC. तो ये मेरे पास A B C D.
वैल्यू प्लॉट करी मैंने तो a इज़ 4, d इज़ 2, माइनस b इज़ 1 एंड c इज़ t। डिटर्मिनेंट कितना आपके पास 11 है, सो 11 इज इक्वल्स टू 4 2 जार 8 माइनस t एंड t इज इक्वल्स टू 8 माइनस 3 लीड्स टू माइनस 3, 8 माइनस 11। लास्ट पार्ट वी नीड टू फाइंड r इनवर्स। इनवर्स का वर्किंग फार्मूला क्या होता है, इनवर्स ऑफ r इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ r डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r। ऑलराइट, एडजॉइंट में क्या करना है, आपने a और d की पोजीशन स्वैप करनी है और b और c का साइन स्वैप करना है। तो मेरे पास एडजॉइंट क्या आ जाएगा, एडजॉइंट इज a और d की पोजीशन स्वैप, सो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, b इज -1। अच्छा, c जो था t ये ऑलरेडी -3 था, जब आप साइन चेंज करेगा इट विल बी 3, सो दैट इज एडजॉइंट डिवाइडेड बाय the magnitude of r। the working formula we have, it's ad minus bc, same working formula। so magnitude of r तो हमें दिया भी है, it's 11। alright, so the answer I can write in the form of 1 upon 11 times 2 3 minus 1 4, that is your matrix inverse। next part, y is inversely proportional to the square root of x। कैसे लिखोगे, y inversely proportional टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, जब साइन हटेगा तो इसकी जगह इक्वल टू और के आ जाएगा डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स। के निकालने के लिए आपको एक्स और वाई पता होना चाहिए। तो अगर मैं इस पॉइंट को देखूँ जहाँ मुझे एक्स नहीं पता, वाई पता है, यहाँ एक्स पता है, वाई नहीं पता, बट इस पॉइंट पे मुझे एक्स और वाई दोनों पता है, ठीक है, मैं इसको यूज़ करूँगा। तो जब मेरे पास वाई की वैल्यू 3 है तो मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या है, इट्स अंडर रूट 4। तो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई के डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू के डिवाइडेड बाय रूट 4 इज 2। तो के का आंसर आ जाएगा मेरे पास 6। ऑलराइट, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एंड ऑफ डी। ऑलराइट, तो अब मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल्स टू के इज वॉट 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स। ये मैंने इस इक्वेशन में k की वैल्यू प्लेस कर दी। अब अगर मुझे c की वैल्यू फाइंड करनी है तो c के लिए मेरे पास x की वैल्यू 9 है, तो जहाँ पर भी x है वहाँ पर मैं 9 प्लेस कर दूंगा। 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 9। ऑलराइट, सॉल्व किया आपने, y इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 9 इज 3 एंड 6 अपॉन 3 इज 2 एंड y इज वॉट, y इज c। तो ये आपका c का आंसर आ गया, ठीक है। अब अगर d निकालना है तो d के लिए क्या है भाई, मेरे पास y.6, अगेन वही इक्वेशन यूज करेंगे, y इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स, लेकिन अब y की जगह मेरे पास 0.6 आ जाएगा, ठीक है। 0.6 इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 0.6। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इट्स वेरी सिंपल, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो यह आ रहेगा 60 डिवाइडेड बाय 6, मतलब ये बराबर होता है 10 के। तो मेरे पास अंडर रूट एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, डी है, अंडर रूट डी बराबर हो जाएगा 10 के। मुझे तो रूट ख़त्म करना है, सो आई नीड टू अप्लाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो मेरे पास डी की वैल्यू आ जाएगी 100 एंड दैट इज़ योर आंसर। आंसर में मैंने यहाँ लिख रहा हूँ कि सी मेरे पास 2 आया और डी मेरे पास 100 आया, उनके स्पेस कम थी तो इसको छोड़ दीजिएगा। Question number 23, the formula for the nth term of a sequence is 2n cube. Find the third term of the sequence, that means कि आपको n की वैल्यू 3 दी हुई है, ठीक है। बहुत सिंपल है, आपके पास क्या है 2n क्यूब और n की जगह उसकी वैल्यू आ गई 3। So 3 cube is 27 times 2 is 54, that is your answer. Part B, the first 4 terms of another sequence are 4 upon 3, 9 upon 5, 16 upon 7 and 25 upon 9. Write down the next term of this sequence. तो डिनोमिनेटर तो आपका बड़ा ही सिंपल है, क्या कह रहा है आपसे 3, 5, 7, 9, तो अब जो नंबर आएगा दैट विल बी 11। सब आपका 2 का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। अगर आप न्यूमरेटर को देखो तो ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इसका मतलब अब आएगा 6 का स्क्वायर, दैट विल बी 36 अपॉन 11, ये आपका आंसर। पार्ट 2, फाइंड अ फार्मूला फॉर द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ऑलराइट, तो मैंने अगर इसका nth टर्म का फार्मूला लिखना है, पहले मैं देखता हूँ डिनोमिनेटर को, तो मेरी सीक्वेंस क्या है, पहला नंबर मेरे पास है 3, फिर मेरे पास आया 5, फिर आया 7, फिर आया 9। ऑलराइट, डिफरेंस मेरे पास कांस्टेंट है, फर्स्ट टर्म इज 3, डिफरेंस इज कांस्टेंट, दैट इज 2। वर्किंग फार्मूला अप्लाई करेंगे विच सेज दैट a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। ये कब अप्लाई करते हैं, जब आपका डिफरेंस कांस्टेंट हो। a की वैल्यू इज 3 प्लस n की जगह n एंड डिफरेंस इज व्हाट 2। सिंप्लीफाई किया यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस सीक्वेंस, दैट इज 2n प्लस 1। ये आपका डिनोमिनेटर आ गया। अगर आप न्यूमरेटर को फोकस करो तो जो भी, अगर ये फर्स्ट टर्म है तो ये 2 का स्क्वायर है, अगर ये सेकंड टर्म तो 3 का स्क्वायर, अगर ये थर्ड टर्म तो 4 का स्क्वायर, फोर्थ टर्म तो 5 का स्क्वायर, 5 टर्म तो 6 का स्क्वायर, मतलब जो भी टर्म होगी उसका एक नंबर आगे।
तो मेरे पास बनेगा ये n+1 का होल स्क्वायर, दैट इज द न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर क्या आपका 2n+1, तो ये आपका आंसर। Question number 24 from the topic mensuration. It says the diagram shows the cone and a cylinder. कोन का आपको रेडियस पता है एंड ये स्लांट हाइट, सिलेंडर का आपको रेडियस पता है, उसकी हाइट पता है 42। कंडीशन ये है कि कर्व सरफेस एरिया कोन का और सिलेंडर का इक्वल है। अच्छा जी, क्या मतलब हुआ इसका? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। वर्किंग फार्मूला पहले अप्लाई करते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इट्स पाई आर एल इज इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इट्स 2 पाई आर एच। कैंसिलेशन हो रही है कुछ? बिल्कुल हो रही है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, रेडियस कैंसिल नहीं कर दीजिएगा, दोनों का रेडियस डिफरेंट है। अगर हम कोन की बात करते हैं तो रेडियस इज 28 एंड स्लांट हाइट इज y, और अगर हम सिलेंडर की बात करते हैं तो रेडियस इज 15 एंड हाइट इज 42। सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं इसको, तो y इज इक्वल्स टू 15 2s are 30 मल्टीप्लाई बाय 42 डिवाइडेड बाय 28। इसको आपने मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करना, आपने इसको कैंसिलेशन करना है। कैसे करेंगे? 7 4s are 28 एंड 7 6 are 42। अगेन मेरे पास हो सकता है 2 2s are 4, 2 3s are 6। अगेन मेरे पास हो सकता है 2 1s are 2 एंड 2 15s are 30। तो 15 times 3 is 45, that is your answer. Question number 25 from the topic vectors. OP and Q are points on the as shown in the diagram. So you have OP, you have OQ. OP and OQ are given. Express PQ. तो मैंने P से Q आना है, बहुत सिंपल है। पहले P से O जाएंगे और फिर O से Q जाएंगे। तो अगर मैं P से O गया तो मेरा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, दैट विल बी 2B माइनस A, ये आ गया PO, प्लस O से Q, दैट इज 4A प्लस 4B। 4A माइनस A इट्स 3A प्लस 4B प्लस 2B 6B, ये आपका आंसर। राइट एज अ सिंगल फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। आपने क्या करना है? सबसे पहला स्टेप, जो भी एलसीएम लेना है और जो कुछ लिखा है उसको आपने ऐसे ही लिखा, x प्लस 4 एंड 3x माइनस 2। मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्सप्रेशन है आपके पास। अब जो आपका न्यूमरेटर है 2x प्लस 3, ये मल्टीप्लाई होगा किससे? 3x माइनस 2 के साथ। और अब -5 किससे मल्टीप्लाई होगा? ये मल्टीप्लाई होगा x प्लस 4 के साथ। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई समझ लेते हैं, हमने किया है यहाँ पर। अब आपने ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 2x इंटू 3x 6x स्क्वायर, 2x इंटू माइनस 2 माइनस 4x, 3x इंटू 3 9x प्लस माइनस माइनस 3 2s are 6 माइनस 5x माइनस 20 डिवाइडेड बाय। डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दें x प्लस 4 और 3x माइनस 2। न्यूमरेटर को अब सॉल्व करते हैं, -4x प्लस 9x एंड -5x। तो आई थिंक दैट दे ऑल विल बी कैंसिल। तो बचा क्या आपके पास? इट्स 6x स्क्वायर माइनस 26 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 एंड 3x माइनस 2, दैट इज योर आंसर।
Alright, in this video we are going to start. It's May-June 2020 of your O-level mathematics. It's paper 2-1, so let's start. Alright, the first question is from the topic statistics. It says that calculate an estimate of the mean speed of the vehicles. Alright, so firstly I will write the working formula of mean, and it is equals to summation of fx divided by summation of x. The first thing we need to find is the value of x, and in this case for estimated mean x is the midpoint. So the midpoint of 30 and 40, it's 35, 40 and 50, it's 45, 55, 65 and 75. These are all the midpoints, and after that I will make another column and label it as fx. In this column I need to multiply frequency with the value of x. So firstly it will be 35 times 10 is equals to 350, and I will do the rest for the remaining values. It will be 18 into 45, 27 into 55, 19 into 65 and 6 into 75. Once I had find all the values, then I will add them together, and the total of summation of fx equals to 4330. Right, now the working formula, it says summation fx upon summation f. The values for summation fx, it's 4330 divided by summation of frequency we have, it's 80. So 4330 divided by 80 leads to 54.125. that is your estimated mean. In part B it says that draw the cumulative frequency curve. So for drawing cumulative frequency, first I need to find out the values of CF, right? So the first value, it's 10. After that it's 10 plus 18 leads to 28. Then 28 plus 27 leads to 55, 55 plus 19 leads to 74, and 74 plus 6, it's 80. So these are all the CF values, and we need to plot the values on the graph. So I have marked all the points on the graph, and I have marked in the way that at 40 the value is 10, so 40 at 10. At 50 we have 28, so 50 at 28. At 60 we have 55, and vice versa. Right, now I will draw the points with the curve, and the curve should be as smooth as possible you can draw. So that's how your curve looks like, right? And once we had drawn the curve, we can do the further questions. Once you have drawn the graph, now it says to find out the median, and for median we know that it's total frequency divided by 2. Total frequency we have, it's 80, so 80 divided by 2 leads to 40. Now we need to find out the value at 40 on your graph. So at 40 the value we have, it's in between of 53 and 54, so I will say it's 53.5, that is the median. After that it says interquartile. Firstly we need to find out the upper quartile, that is Q3, and the working formula is 3 upon 4 of total frequency, that is 80. So if you simplify you will get 60. Now we need to find out the value at 60. We need to find the values on the x-axis. So at 60 the value I am getting is 62, so that is my upper quartile. For lower quartile, that is Q1, it's 1/4 of your total frequency, that is 80. It means that it's 20. Now we need to find out the value of your graph at 20, so it leads to 46, right? And for interquartile, it is the difference of upper quartile and lower quartile, and the value for your interquartile is 16. That is your answer. It's question number 2 from the topic transformation. It says that in the first part, describe fully the single transformation that maps triangle A onto triangle B. So triangle A transforms onto triangle B. So firstly we can see that it is a reflection, but we need to define the line of reflection. So it's a reflection across x-axis, or you can say that it's a reflection across y equals to 0. Both are same. After that, triangle A is mapped onto triangle C by a rotation 90 degree anti-clockwise about the origin 1, 1. So first let me mark the point here, and it's a rotation anti-clockwise 90 degree. So how you are going to see your triangle C? So firstly, if you observe that that is a length of 3 units, right? If it transforms 90 degree anti-clockwise, so this length will be lie here. All right, so firstly if I draw the base, that will be like this. It's 3 units and it's 1 unit upwards, right? So that is your triangle C after rotation 90 degree anti-clockwise about the point 1, 1.
After that, it says that triangle A is mapped onto triangle D by a single transformation P. The matrix P is 2 0 0 2. Describe fully the single transformation P. So P is basically is an enlargement because that matrix is an enlargement matrix, right? The scale factor we have it's 2 and center of enlargement is at origin. So you need to describe three things. Firstly, what is the transformation, what is the scale factor, and what is the center of enlargement. So that is your answer. It's question number 3 from the topic algebra. Rearrange m equals to 4n minus 3 to make n the subject. That means we need to make n the subject. So we need to separate n from the equation. So firstly, I will see that it's negative 3 on the right side. If you shift it, it will be positive 3 on the left side. So it will be m plus 3 equals to 4n, and after that m plus 3 divided by 4 equals to n. So that is your first part answer. Solve the simultaneous equation. It's 10x plus 7y equals to minus 3, 5x minus y equals to 3. So I will make x the same coefficient, so I will multiply the equation, second equation, by 2. So after multiplication it will be 10x minus 2y equals to 6, and the first equation is 10x plus 7y equals to minus 3. We have the same coefficient of x. Now I need to change the sign, so I will change the sign of second equation. It will be minus, minus and plus, right? With the change in sign you can eliminate 10x and minus 10x, so the leftover part is minus 2 minus 7, it's minus 9 equals to minus 9y equals to 6 plus 3 is 9. So we got the value of y and it is equals to minus 1. With the help of y you can find out the value of x, so I will use equation 2. You can use any equation if you want to. So 5x minus y equals to 3. The value of y we have it's minus 1 equals to 3. 5x plus 1 equals to 3. 5x equals to 3 minus 1 is 2, and x equals to 2 divided by 5, that is equals to 0.4. So that is your answer for x and y. After that, part C. Solve the equation 5x square plus 3x minus 1 equals to 0. We are going to apply quadratic here. So the value of A it's 5, the value of B it's 3, and the value of C is negative 1. The working formula we have it's minus B plus minus under root B square minus 4AC divided by 2A. I'm going to put the values here. So minus B is what? It's 3, plus minus under root B is what? It's 3, square minus 4A is what? It's 5, and C is negative 1 divided by 2. The value of A it's 5. So now it's equals to minus 3 plus minus under root 9 minus minus plus 4 5s are 20 divided by 10. So it is equals to minus 3 plus minus under root 29 divided by 10. After that it will be minus 3 plus minus the root of 29, it's 5.38 divided by 10. We are going to solve it with both signs, 5.38 with the positive one and minus 3 minus 5.38 with the negative one. After solving you will get the value of x. The positive one is 0.24 and the negative one is minus 0.84. These are your final answers. Question number 4 from the topic interest. It says Anton invests 6,000 in account for 5 years. So the principal we have it's 6,000 and the time is given it's for 5 years. The account has a compound interest rate of 2.5% per year. Alright, at the end of 5 years he spent 4,200 of this money on a family holiday to Malaysia. How much money is left in the account? So first thing I need to apply the working formula which says that amount is equals to principal 1 plus r divided by 100 to the power t. I'm going to put the values here. So principal we have it's 6,000, 1 plus rate is given it's 2.5 divided by 100 and the number of years are 5. So we need to simplify it first. After solving this expression 1 plus 2.5 upon 100 to the power 5, you will get 1.13 and we need to multiply 1.13 with 6,000, so it will be 6788.4. That means this is the amount he is having after 5 years, but the amount is 6788.4 and he spends 4,200. That means we need to subtract 4,200 and the leftover is
$2588. That is the leftover amount he is having after spending 4200. So that is your first part answer. After that, Anton changes $800 into Malaysian ringgits MYR for his trip. The exchange rate is $1 is 3.16. So if $1 is equals to 3.16 ringgits, so the amount of $800, it will be very simple. 800 multiply with 3.16. All right. So when you multiply, it will be equals to 2528 ringgits he is having. After that, it says he spends 2250 ringgits, and then it changes the remaining amount. So he spends 2250. So we need to subtract 2250, and the balance amount is 278 ringgits. And then it says the exchange rate after return is $1 is 3.27. So if $1 equals to 3.27 ringgits, he is having 278 ringgits. How much the amount of dollar will be? So it's very simple. We need to divide 278 divided by 3.27 and gives you the value of 85 dollars. That is left over, and that is your answer. In part C, it says Anton invests $1,500 in another account. The account has a compound interest rate of P% per year, so rate is unknown. At the end of 3 years, time is given. The amount is 1598.85 in the account. All right. So the working formula we have is amount is equals to principal 1 plus R divided by 100 to the power T, that is number of years. Amount we have, it's 1598.85 equals to principal is $1,500. 1 plus rate is what? Rate is unknown, that is P, divided by 100 to the power 3. Alright. So we need to simplify the equation. So it's 1598.85. 1500 when you shift on the left side, it will be division, is equals to 1 plus P divided by 100 to the power cube. So firstly, 1598.85 divided by 1500, the value is 1.066 equals to 1 plus P divided by 100 to the power cube. We need to eliminate the cube, so we need to apply cube root on both sides of the equation, right? So the cube root of 1.066, it's 1.02 equals to 1 plus P divided by 100. So it will be 1.02 minus 1 equals to P divided by 100. It gives you the value of 0.021 equals to P divided by 100, and when you multiply with the 100, so that will be P equals to 2.15%. That is your answer. It's question number 5. It says a company makes and packages chocolate bars. This box contains a chocolate bar. The box is in the shape of a triangular prism. Show that x is equals to 4.5. So you are having a right angle triangle. We can apply Pythagoras here. So that will be 7.5 square equals to x square plus 6 square. 7.5 square minus 6 square equals to x square. We need to apply root on both sides to find the value of x. So when you find out the square and subtract that, you will get x equals to 4.5, and we need to show the same. In next part, it says that these boxes are packed into cartons. Each carton is a cuboid with internal dimensions of 30 by 28 by h. 80 boxes fill one carton exactly. Calculate the value of h. So firstly, I will find the volume of this chocolate bar. Alright, the box. So the volume is equals to area of the cross section. So the area is basically the area of a triangle, and the working formula we have, it's 1 upon 2 base into height, that is the area of a triangle, and multiply with the length, right? So I'm applying the area of the prism. So the base we have, it's 6, and height we had find out it's 4.5. The volume we got, it is equals to 189. Now we need to multiply the volume with 80 because there are 80 boxes. So when you multiply with 80, you will get 15120. Alright. And the volume of a rectangular cuboid, it's length into breadth into height. So we have length, we have breadth, and height is unknown.
So I'm going to place the working formula L into B into H. So you can find out the value of H by dividing 30 and 28. So 15120 divided by 30 and divided by 28, it leads you to 18, and that is your answer. In the next part, it says one day the company packs 37,500 of these boxes into cartons. How many complete cartons are packed that day? So it says complete cartons. So what you need to do, 37500 divided by 80, because 80 boxes can fill one carton exactly. So when you divide, you will get 468.75. So that means on that day 468 cartons are packed. Part C, it says that the company sells the chocolate bars to shops for 0.70 each bar. The company makes 40% profit. So if it says profit, that means now it talks about 140 percentage, right? So we have a working formula which states that new divided by old, and we are talking about price here, is equals to new divided by old, and we are talking about percentage here. So the new percentage, the company makes 40% profit, so that means it's 140 divided by 100. We need to find out the cost, that means what is the value at 100, and when it is 140, so the value is 0.70. So after cross multiplication, you will get the value of X, and that is equals to $0.5. So that is your answer. In the next part, it says a shop buys 1 carton of chocolate bars. They sell 3/5 of the bars at a profit of 30%. They sell each of the remaining bars at $0.84. Calculate the overall percentage profit made by the shop from selling all 80 bars. So firstly, it says 3/5 of the bars. So we have 80 bars. So the value of 3/5 of 80, that is equals to 48. That means it talks about 48 bars. Now we need to find out the selling price, because it says that it is the profit for 30%, right? So for 30%, it's 130. Originally we have 100. The price that the shop pays for it, it's $0.7, and the new price we need to find out. So 0.7 times 130 and divided by 100, so that is equals to $0.91 for the 48 bars. So I need to multiply 0.91 times 48, which gives me the value of $43.68. Alright, so out of 80 bars, 48 are sold. So we need to find out the remaining bars. So 80 minus 48 leads to 32. And for 32 bars, the cost price is given, and that is equals to 0.84. So 32 times 0.84, it's $26.88. Alright, now I need to find out total selling price. I need to add these two. So 43.68 plus 26.88. So when I add them, I get the value of $70.56. That is the total selling price. Alright, so if I talk about the cost price of these 80 bars, so for cost price, 80 times 0.70 and 80 times 0.7, it leads to $56. Alright, now the working formula for percentage profit. Percentage profit is equals to selling price minus cost price, that is profit, divided by cost price times 100. So selling price we have, it's 70.56 minus cost price, it's 56. Cost price 56 times 100. So after solving it, you will get the value of 26%. That is the percentage profit, and that is your answer. Question number 6, from the topic graph of functions, you have values of x and y. You need to plot the values on your graph. So when x is -3, the value of y, it's -2.75 and 2.75, 2.5, 6, 7 and 7.5. Alright, so that is 2.75. I will remove the other sign. Alright, this one. Alright, at -2, it's -1, this one. At -2, it's +1. At -2, it's +1. At -1, it's 1.75, 5, 6, 7 and 1.75. At 0, it is equals to 1. At 1, it's 0.25. So 0.1, 0.2 and 0.25, this one.
at 2 it is equals to 1, and at 3 we need to find out the value at 3 here. When you place x is equals to 3, it will be y is equals to 3 cube upon 4 minus 3 plus 1 gives you the value of 4.75. Alright, so when x is 3, y is 4.567 and 75. So you have all the points. We need to construct those points with a smooth curve. So that is your curve. Make sure that you are connecting with all the points. After that, this one, and that is your curve looks like. After that, it says on the same graph, draw the graph of y equals to 1 upon 3x plus 1. So for that purpose, I will make a small table here, and I will assign the value of x to find the value of y. Alright, so firstly, if I say that when the value of x is 0, right? So when x is 0, y is equals to 1. So that is my first point, 0 and 1. And simply, if I say that when y is 0, alright, when y is 0, so what will be the value of x? I can see y 0 equals to 1 upon 3x plus 1. I will shift minus 1. So that will be minus 1 equals to 1 upon 3x and x equals to minus 3. So when y is 0, x equals to minus 3, I have 2 points. I can plot the line here. So I'm doing it with green pen. So when x is 0, y is 1, that is my first point. And when x is minus 3, y is 0, so that is my second point. I need to construct the line with these 2 points here. So that is an equation of y is equals to 1 upon 3x plus 1. And after that, for the next part, we use the graph to find the value of x when these two equations crosses. So I need to find out the value at this point first. So that value is minus 2.3. That is my first value, and the next value is, it is approximately 0 or 0.1, and the last value I am getting, it's 2.3. Alright, so these three values I'm getting here. And in the last part, it says the values of x where y equals to 1 upon 3x plus 1 and y equals to x cube upon 4 minus x plus 1 crosses are the solution of the equation ax cube equals to bx. Given that a and b are integers, that means it should be a whole number. Find a and b. Alright, so we got two value equations of y. The first one, it's y equals to 1 upon 3x plus 1, and the next one I have, it's y equals to x cube upon 4 minus x plus 1. So on both sides we have y, right? So I need to equate those two equations. So now it will be 1 upon 3x plus 1 equals to x cube upon 4 minus x plus 1. Now I need to arrange my equation in the same format at ax cube equals to bx. Alright, so firstly what I will do, I will gather all the x on the one side. So now 1 and 1 cancels. So I will shift minus x on the left side. So it will be 1 upon 3x plus x equals to x cube divided by 4. Alright, I am continuing with my solution here. So on the left side I will take LCM, and that is 3. So it will be x plus 3x equals to x cube divided by 4. Now it will be 4x upon 3 equals to x cube upon 4. If I do the cross multiplication, so now it will be 16x equals to 3x cube. And the given equation we have, this one, it says ax cube equals to bx. Alright, so by comparing, we can see that the value of a is 3. So a is equals to 3, and the value of b we have, it's 16. So these are your answers. And the last part, it says here are 4 equations. The graph of these equations are sketched below. Write the correct equation below each graph. So for the first one, we see that in these two, in this one especially, we have negative y intercept, but this one is simply the equation of y equals to 2x square, because y can never be negative in this situation, right? No matter if you have negative x or positive x, the squaring of x will make y positive every time. But if you observe in these two graphs, you have negative values of y that cannot be possible in this one. So that is the equation of y equals to 2x square. That is your first one. After that, for the next part, now we have a negative value of y as well, and we have negative x and positive x values.
So for that part, I need to check for y-intercept. Y-intercept means that if I place x0, the value of y should be negative. Alright. If I start with this one, if I place x0, y will be 0. If for this one, if x is 0, then y is negative 2. So that thing simplifies and proves in the second one. So you have an equation y is equals to 2x square minus 2. Alright. And in the last one, two leftover equations we have is either it's this one or it's this one, right? So if you need to simplify, so the first equation we have y equals to x square minus 2x. If I take x common here, so that is x minus 2, and since the curve cuts the x-axis, that means we have y equals to 0. So after comparing, you can see that x equal to 0 and x equals to 2. So in this scenario, we have one x-intercept at 0, satisfies, and the other x-intercept, it's positive. That means the last equation we have, it's y is equals to x square minus 2x. In this equation, you will be having negative value of x, but in your graph, it's the positive x-axis, not the negative x-axis. Number 7, it says diagram show the quadrilateral and part of a regular octagon. Regular means all angles are equal, right? So it means that this angle we have, it's also 135. AB is a straight line. That means you can find this angle by subtracting 180 from 135 from 180, and it is 45, right? Form an equation in x and solve it to find x. Alright, so now you have a four-sided figure 1 2 3 4. The sum of four sides is equals to 360. So I will make an equation here, 45 plus 3x plus 103 plus x plus 20. Sum of all angles equals to 360. After solving, you will get x is equals to 48, and that is your first part answer.